Hello everyone, welcome back. So yes, we are done with few videos on the series of frequently asked questions. I hope you have gone through frequently asked questions part 1, part 2. Today we are over here to discuss part 3. हाँ, हम लोग आज यहाँ पे important frequently asked questions के third part में again as earlier we were mixing different subjects. As you are aware, frequently asked questions वो सारे कॉन्सेप्ट्स है जो जीपैट में मल्टीपल टाइम्स आके गए हैं. So what do we expect? Do I questions from this web series? Yes, I do expect some questions. Other, I would say more questions from this web series. Other than this, I hope and I wish you have gone through the web series of drug of the day, boost your basics. हाँ मैं BOB लिखता हूँ उसको. Then sure type of questions, tips and tricks. सारे वेब सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेट इट बी जीपैट, let it be NIPER, let it be ICT, let it be BITS, Manipal, whatever you say about. Anyways, let's get to the point. What is it which we are going to discuss over here today? We are going to discuss today on the topic of different enzymes. So yes, you can say that हम थोड़ा सा बायोकेम के बारे में बात. We are going to talk a bit about different vitamins. So again, a bit of biochem involved. And lastly, बिफोर वी एंड इट, हाँ हम सबका फेवरेट नहीं बट यस सबसे इजी सब्जेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस. ज्यूरिस के ऊपर भी थोड़ी बात कर लेंगे. क्वेश्चंस पास्ट इयर्स में कैसे आके गए एंड हाउ इज इट व्हिच वी एक्सपेक्ट टू कम इन द अपकमिंग ईयर एज वेल. एनीवे, if at all you have still not downloaded PHARMAELITE's app from Play Store, just go to Play Store, type PHARMAELITE GPAT Academy. You will straight be going onto the app, download it because there's a lot of content for you. The link is in the description of this video as well. All right, let's get going. First and foremost thing what we are going to discuss today over here is going to revolve around different enzymes. As I said to you initially, जब हम enzymes की बात कर रहे हैं, first and foremost thing which we need to understand, there are a lot of enzymes. Some are into genetics, some are somewhere into therapeutic applications already. Those enzymes are already used for therapeutic applications. They are used for treatment of some specific diseases already in the process. Other than used in some specific processes, there are few enzymes which has got even analytical applications. So when we talk about analytical applications, I specifically mean that those specific enzymes will be involved somewhere in our biological system. I'm sorry, just thoda sa light adjust kar lete. I think there's some problem, so trying to resolve it. Just a minute. भाई तुम पीछे रहो. Alright, sorted. Yep, far better. So basically कुछ एंजाइम्स है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं. जैसे पीसीआर के लिए भी आपने कुछ एंजाइम्स सुने थे, शायद वो यहाँ पे ऑलरेडी है. शायद कुछ एंजाइम्स आपने आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाला चैप्टर याद है, आरडीएनए. Again over there also there were few enzymes. Then there are few enzymes which are into analytical applications. जैसे आपका ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन होता है, कैसे होता है? अपने आप होता है. वो ग्लूकोमीटर में कोई जादू है? Somewhere this all is a part of enzyme. GPAT NIPER में इस पे से क्वेश्चंस कैसे आएंगे? So straight forward question in GPAT, which among the following enzyme is used in polymerase chain reaction? So basically what we need to understand when it comes to GPAT, this all individual enzymes, what are their therapeutic applications, what are they being used for? That is something which we need to know when it comes to our enzymes. So when I talk about tag DNA polymer, yes, it's used for PCR, polymerase chain reaction. Official short form है, मेरा बनाया हुआ नहीं है. Restriction endonuclease widely used for gene transfer, your DNA fingerprinting process as well. If you remember, जो RDNA का चैप्टर था उसमें restriction endonuclease के अलग-अलग टाइप थे. It's my advice to you, check what is type 1, type 2, type 3. How are they different and what are their applications? कुछ specific advantage है में से कोई enzyme का, just check once that as well. Talking about therapeutic applications, the very first enzyme which is streptokinase and urokinase, yes, ये दोनों enzyme हम सब लोग ने कोलॉजी में anticoagulants के चैप्टर में पढ़ा था. If you remember, these two enzymes were right there in the chapter of anticoagulants. And ये दोनों enzyme का काम एक ही है, that they are going to remove blood. खून का जब घट्टा बन जाता है, I hope we get it. Ghatta, when it's a clot, that is the moment when this blood clots works.
Talking about asparaginase, that's another enzyme which is used for cancer treatment. Papain, widely used as an anti-inflammatory. Alpha-1 antitrypsin. If you remember, there are different drugs which are used for treatment of inflammation. Trypsin, chemotrypsin के tablets are the ones which are widely used. Trypsin and chemotrypsin tablets are the ones which are widely used for this therapeutic application. So yes, same alpha-1 antitrypsin is used to treat emphysema as well. Different enzymes like lipase, trypsin, if you are suffering from digestion problems, then in that case, this can be used for digestion, not only in pancreas, pancreas को problem है तभी ही नहीं, उसके सिवाय भी lipase and trypsin can be used whenever digestion issue is there. So digestion issues can be due to multiple enzymes and not necessarily due to pancreatic. But yes, depending upon the cause, your treatment would go accordingly. Most important from entrance point of view is analytical applications, streptokinase, urokinase, and this. ये 5 में से यहाँ पे चलेगा, कोई पंगा नहीं. ऊपर के 2 और नीचे के तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, because when you talk about glucometers, which is used to estimate your blood sugar, blood glucose, खून में कितना शुगर है, अगर उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, the enzymes which are widely used includes glucose oxidase and peroxidase. ये दोनों एंजाइम glucose oxidase और peroxidase widely to estimate the blood glucose level. Then you have another enzyme which is urease. Obviously नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो यूरिया के एस्टिमेशन के लिए यूज होगा, यूरिएज. ऑन सेम ग्राउंड्स वी हैव कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, तो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई वो कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेशन करके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स आपको बताएगा दैट बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल है. सो व्हेन इट कम्स टू बायोटिक फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट, टू बी ऑनेस्ट, हमको डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए ये तीन को बायोट करने में. देयर कोरिलेशन इज स्ट्रेट विद देयर नेम, करेक्ट. बचता स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस है, फार्माकोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा है, शुड नॉट बी टफ. These two were the hardcore of our PCR chapter and our RDNA chapter. So I don't see problems by adding this two as well. इतना कर ले रहे हो, safer side ये चार भी कर tough, then at least बाकी के पास तो कर ही लेना. Don't worry, all these videos are always going to be on this channel. No need to write anything, no need to screenshot anything. But 1000% sure there will be questions from all those web series which we did earlier, and also this. None of the videos are just to have something in place. Going further, आगे के एंजाइम्स पे जाते हैं. एनालिटिकल एप्लीकेशंस ही क्या, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आके गया है, एंड द शॉकिंग पार्ट ऑफ इट यू हैव रेड इट इन योर बायोटेक. अभी जिसको याद होगा इम्यूनिटी का चैप्टर, वो शायद मेरे साथ कोरिलेट कर पाएगा. अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड योर हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, ये दोनों एंजाइम एलिसा टेस्ट के अंदर यूज होते हैं. क्या फंक्शन है, एलिसा टेस्ट कैसे होता है, क्या डिटरमाइन करता है, एज ऑफ नाउ रिक्वायर्ड नहीं, but you must read it because ELISA test entrance point of view काफी ज्यादा important है. GPAT, NIPER, ICT, BITS, MANIPAL, all of them. Straightforward question यही आता है कि ELISA test is used for identification of what. तो आपको ELISA test का application पता होना चाहिए कि ELISA test से ये identify होता है, ये disease पता चलता है. जैसे आपको SGOT, SGPT से कुछ पता चलता है, जैसे टेस्ट से कोई तो विटामिन के लेवल्स पता चलते हैं. कौन सी है? Please type it in the chat box. On same grounds, when you talk about alkaline phosphatase, horse reductase, peroxidase, ELISA test में वो used होंगे, but ELISA test एक disease का identification होगा. Same way you have luciferase, which is for triacyl glycerols along with lipase. दोनों का काम एक ही है, दो different enzyme. And जैसे urease था, को यूरिया पता चला था, वहाँ पे यूरिकेस है, तो यूरिकेस से हमको यूरिक एसिड पता चलेगा. And I hope अगर यूरिक एसिड के levels बढ़ते हैं तो क्या होता है पब्लिक? What is the disease the patient might suffer from? अगर यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ते हैं, कैन आई से द पेशेंट माइट जस्ट सफर फ्रॉम गाउट? आई होप वी ऑल अग्री टू दिस. सो बेसिकली अगर डिजीज आइडेंटिफाई करना है तो हमको ये पता करना पड़ेगा यूरिक एसिड का लेवल क्या है, एंड यूरिक एसिड का लेवल पता करना है तो आई नीड दिस एंजाइम व्हिच इज यूरिकेस. आइडेंटिफाई द डिफरेंस, दिस इज यूरिक एसिड, दिस इज नॉट यूरिया. यूरिया होगा तब आप यूरिएज यूज करोगे, बट जब यूरिक एसिड की बात चल रही है, इन दैट पर्टिकुलर केस वी आर गोइंग टू डू इट with the help of uricase. फर्क है, confuse मत हो. This is very very important as I said you. Going further, these are few other enzymes. I'm sorry. The most important one among this four is majorly your glucose isomerase. Isomer है, isomer. I hope you all are aware about the term isomer. Right from 12th standard ये isomer word हम सबको बहुत बार मिलके गया है. So when we talk about isomers, glucose, fructose, we all know that somewhere they're correlated. ये दोनों के बीच में कोई तो टोटोमेरिज्म भी है ना,
ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में कोई तो टोटोमेरिज्म भी है, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बट मैं कुछ तो लिख रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। यस, इट हैज कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, हाँ ना, हाँ या ना, कोई टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? अगर एग्जिस्ट करता है तो कौन सा करता है? टाइप इट इन द चैट बॉक्स। अल्फा अमाइलेज इज अनदर एंजाइम मेंबर, प्रोटीज इज अदर एज वेल। रेनिन यस यूज होता है इन चीज प्रिपरेशन बट नॉट दैट वाइडली, याद रख लो तो भी। तो यहाँ से दो एंजाइम, यहाँ का एक, यहाँ का एक, यहाँ के 4 और वहां के 5, मिनिमम ये 9 एंजाइम में से कहीं ना कहीं तुमको जीपैट नाइपर आईसीटी बिट्स या मनी पर कहीं ना कुछ 1000% श्योर मिलेगा। So ensure that you don't miss on. Going further, ग्लाइकोप्रोटीन्स, अभी अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन्स है, अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन्स के अलग अलग फंक्शंस है। हाँ, कुछ बहुत इजी है जहाँ पे कुछ मेमोराइज नहीं करना है, इट्स इजी टू रिमेंबर एंड वी शुड बी एबल टू आंसर। कहाँ पे कोई लॉजिक है जहाँ पे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट कहीं पे कुछ अगर अलग है देन यस वी नीड टू बाय आउट दैट नाउ एंड नाउ। सो अगर बात करते हैं, वी ऑल नो दैट कोलेजन इज समवेयर इन बोन, so it is going to maintain the structure. If we talk about different glycoproteins like hydrolases, proteases, glycosidases, end में ases आ रहा है, ases आ रहा है, ases आ रहा है, although these are glycoproteins but at the end of the day these are enzymes. I hope आपको enzymes और proteins का relation पता है, right? All enzymes are proteins कि all proteins are enzymes but proteins, जो भी relation है, I hope we are aware about it. 12th standard first line का 12th standard 12th chapter chemistry in everyday life में first line देंगे enzymes part. Ceruloplasmin is majorly for transport. Immunoglobulins very important. The function is your defense system. हम सबको पता है this already, right? During COVID there was one specific immunoglobulin IG antibody था जो काफी बढ़ गया था, which was a specific indicator for COVID as well. At the same time immunoglobulin पे question होने के chances काफी ज्यादा है due to COVID immunity पे question पक्का होंगे. Which antibody is in highest proportion, which antibody enters through placenta, कौन सा antibody का molecule का weight सबसे ज्यादा है, कौन सा छोटा है, कौन सा dimer है, कौन सा monomer है, कौन सा वहाँ पे ये सारे information मिलेगी. Just download PHARMAELITE app from Play Store and you will get it. Going to synovial glycoproteins. अभी synovial fluid करके भी कुछ होता था. We all know in our 12th standard structure, joint, knee joint. Obviously that's going to be for lubrication. Nothing greatly important. Erythroprotein and erythropoietin are different hormones. Important. Blood group substances, antigens. नहीं भी पढ़ा तो भी I'm sure you will be able to answer it. Fibrinolactin and laminin are cell recognition and addition enzymes, or I would say cell recognition and addition glycoproteins. चिपकेंगे यहाँ पे, partly important, एक बार याद रख लेना. Intrinsic factor very important for absorption of vitamin B12. So if you remember your 12th, oh sorry, by 12th, if you remember your semester 8 biopharmaceutics, intrinsic factor or B12, first chapter in our favorite book of Brahmankar के first chapter में ये चीज already है, where they are talking about example of vitamin B12's absorption with the help of intrinsic factor, IFB12 लिखते थे, अगर आपको याद हो तो. So as I said, we are combining different subjects together. Lastly, fibrinogen एक प्रोटीन है which we all are aware blood clotting के लिए must है. क्लॉटिंग के पाँचों में ये आता ही है. मैंने आपको बोला क्लॉटिंग फैक्टर्स बाहर करने के लिए. अब बोलना मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स तो 12th स्टैंडर्ड में था, वापस क्यों पढ़ने का आएगा मेरे दोस्त. क्लॉटिंग फैक्टर्स देयर आर 10 to 12 और 13. कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स है? फैक्टर का नाम स्टुअर्ट फैक्टर है. कोई तो क्लॉटिंग फैक्टर मस्ट होता है. कौन सा है? एपीपी, एनाटॉमी पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी. वापस पूरा डॉट डॉट. PHARMAELITE की कंसाइज नोट्स ऑलरेडी ऐप पे है. Just download PHARMAELITE app from Play Store. You can see the demo version of all those concise notes and take a call accordingly. अच्छा, ये नंबर आपके लिए ही है. कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, feel free to ask. We started first with enzymes, then we went to glycoproteins. Now, going further, let's talk about different vitamins. अब vitamins पे क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं. एक उनका फेवरेट है vitamins को लेके, which revolves around कौन से vitamin में कौन से रहेंगे. Yes. एक उनका फेवरेट है कौन से विटामिन में कौन से रहेंगे, ये उनका फेवरेट एरिया है. सो इफ यू टॉक अबाउट देयर फेवरेट जोन, व्हिच विटामिन हैज व्हिच रिंग, उनका दूसरा फेवरेट एरिया है कौन से विटामिन का कौन सा एंटागोनिस्ट है. यस, व्हिच विटामिन हैज व्हिच स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट इज अनदर स्पेसिफिक डोमेन फ्रॉम वेयर क्वेश्चन टर्न्स अराउंड. वी ऑल नो विटामिन के हैज समथिंग टू डू विद द क्लॉटिंग पाथवे, राइट. अगर विटामिन के लेवल्स अच्छे होते हैं तो क्लॉटिंग जल्दी होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं पता. विटामिन के ज्यादा हुआ तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है कि रुक जाती है. सपोर्टिव है कि सपोर्टिव नहीं है,
एनीवेज जो बाजू में उसके एंटागोनिस्ट है, दिस आर देयर ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड एज एंटीकोएगुलेंट्स, डाइक्यूमेरॉल एंड वारफेरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो एंटीकोएगुलेंट्स में फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, बट इट्स कोरिलेटेड बाय योर बायोकेमिस्ट वेल। टॉकिंग अबाउट थायमीन, थायमीन इज मतलब वो थायमीन को तोड़ देगा। एंटागोनिस्ट का बात कर रहा है ना, pyrithiamine, again something to do with that, oxythiamine, thiamine, thiamine, oxidation कर देगा। pyrithiamine, another different type of metabolism, anyways which is going to lead to destruction of thiamine, it's going to act as an antagonist somewhere। नाम से ही आपको लॉजिक मिल जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ श्योर टाइप ऑफ क्वेश्चंस का वेब सीरीज देखो। इट्स ऑन द सेम यूट्यूब चैनल व्हेन वी आर व्यूइंग द वीडियो नाउ। क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन प्रेस करो, check the playlist, you will get a playlist of sure type of questions over there। खत्म कर दादा वहां से, that's where the entire thing lies। Talking about ribo, एविडिन एंड डिसथायोबायोडिन, पास में एक क्वेश्चन ऑलरेडी एविडिन को लेके earlier year question papers में आके गया है somewhere in GATE, so please ensure that you remember this। फॉलिक एसिड को लेके मेथोट्रेक्सेट, ट्राइमेथोप्रिन, अमाइनोप्टेरिन, ये एंटागोनिस्ट आप गलती से भी नहीं बोलोगे, प्रोवाइडेड यू माइट हैव रेड द चैप्टर ऑफ सल्फोनामाइड्स एंड एंटी कैंसर। अगर आपने फार्माकोलॉजी फार्म केम के ये दो चैप्टर्स पढ़े तो शायद ये क्वेश्चन या ये टेबल आप नहीं भी देखते तो भी आप सॉल्व कर पाते। लास्टली पावा, which is again from sulfonamide, तो ये भी हम लोग ने वहां कर लिया। So if you check out of this 7 vitamins, this and this, ये तीन तो आपके फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है। आपने ये टेबल बायोकेम पॉइंट ऑफ व्यू एज एंटागोनिस्ट नहीं भी देखा होता, still the ideal logic and the ideal thing should be that you should be able to solve this question। यहाँ पे हमको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बाकी जो 3-4 बच रहे, if possible just remember them, अगर नहीं होता still at least give a try for biotin and thymine, सब easy है, I've already correlated it, niacin especially। Coming to the last part of our frequently asked questions, type 3। I hope तुमने type 1 type 2 देखा होगा। When we talk about frequently asked questions type 3, one of the important things, oh table किधर गया, so we were basically moving to jurisprudence। तो jurisprudence में इतना सारा है, people start reading about कौन सी चीज कितने साल तक है, कितने constitutional members है। So one question which has always come from jurisprudence is on the schedules। Schedule A किसके लिए होता है, B किसके लिए होता है, M किसके लिए होता है, Z किसके लिए होता है, X किसके लिए होता है, M किसके लिए, Y किसके लिए। तो एक तो वो schedules का पार्ट हम सबको पढ़ना ही है। Other than schedules, the commonly asked thing from jurisprudence is कौन से कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं, डी टैब में कितने मेंबर है, डी टैब में कौन से मेंबर कहाँ से आते हैं, who elects them। So members का part and schedules का part is a favorite and the sure question। GPAT हो, NIPER हो, ICT हो, BITS हो या मणिपाल हो, ये आपको वहां पे मिलेंगे ही मिलेंगे। Sir, then why are we doing this years? Because every year there is a question from which particular act came out in which year। या तो उसके ईयर पे क्वेश्चन आता है, वेरी रिसेंटली ऑफ रिसेंटली एक बार ऐसा आया था कि मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, सॉरी प्रेगनेंसी एक्ट का टर्मिनेशन कब हुआ था। तो ये वो ईयर्स है जब वो पास हुए थे, बट वो ईयर क्वेश्चन ये आया था कि वो बंद कब हुआ था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो समवेयर ओवर इजी पढ़ा रहेगा तो ये भी आंसर कर पाए रहोगे। एंड लास्टली कभी कभी जब उनको बहुत मन होता है तो फाइन पूछ लेते, फाइन मतलब आप कैसे हो ऐसा नहीं पूछते, दे आस्क यू एनडीपीएस एक्ट में फाइन कितना है, तो वो जो अमाउंट है 15,000 जेल वगैरह जो भी फाइन है, जस्ट गो थ्रू दैट एज वेल। कमिंग टू आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कौन सा एक्ट कौन सा ईयर, डीपीसीओ, अरे ड्रग प्राइस कंट्रोल, अच्छा वो डीएनसी था ना 1940 एंड 1945, इधर है डीएनसी डीएनसी डीएनसी, ओके 1940। अभी एक्ट एक साइड में आता है और उसका रूल्स एक एक्ट, रूल्स का ईयर अलग है कहीं कहीं पे, सो बी केयरफुल। डीएनसी एक्ट 1940, डीएनसी रूल्स शायद 1945, चेक चेक चेक, कुछ अगर जुरिस्प्रूडेंस का बुक। सो इफ यू टॉक अबाउट ऑर्डर, डीपीसीओ 1987, नारकोटिक्स 1985, एंड में स्टार करके बता दूंगा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑलरेडी 1991 में होके गया है। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्सरसाइज ड्यूटीज एक्ट, टू बी ऑनेस्ट नॉट दैट ग्रेटली इंपॉर्टेंट। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं एक्ट
एक्ट, पहले एक्ट, उसके बाद उसके रूल्स, 1954 अनदर 1955. वेरी इंपॉर्टेंट. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, लोग फार्मेसी एक्ट जो पढ़ते, दैट इज 19. Now this is first Pharmacy Council of India, which is 1949. Understand the difference. Check कर लेना, वहाँ पे आपको 1914 मिलेगा Pharmacy Act में. Going to Import of Drugs Bill 1937, Dangerous Drugs Act नहीं चाहिए, Poisons Act 1919, Sea Custom Act, Indian Merchants Act. To be honest, not that greatly important. Very important Patents Act. एक स्टार हुआ, 3 स्टार हुआ, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, 9 स्टार. इंपॉर्टेंट है. बच्चा क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बाहर नहीं किया चलेगा. जिसको स्टार किया है उसमें से कुछ भी छोड़ना मत. Whatever we are doing, when we are saying important frequently asked questions, for sure there is a concept will repeat itself. I hope you are liking our web series of frequently asked questions. कुछ चेंजेस है, ऑडियो बराबर नहीं है या वीडियो बराबर नहीं है या क्वेश्चन ज्यादा करने हैं या ड्यूरेशन बढ़ाना है, whatever it is, please type it in the chat box and we'll be more than happy to make the changes. I hope we are making the learning easy for you. In case of any to ask, feel free to reach out to us anytime. Most importantly, don't dream small. There is a long way to go and we will make it happen together. Thank you so much.